Hi friends, meeting you today again for CET lecture. We have started with definite integration problems for CET. So let us see two more formulae today and then proceed ahead. Okay, all set? Definite integration? Okay, fine. Let's see the two important formulae. 0 to pi by 2. उस दिन भी जो formulae देखे थे, they were 0 to pi by 2. Log sin x integral equal to, instead of log sin x, you can have log of cos x also, 0 to pi by 2. Both the answers are same. Minus pi by 2 log 2. Or if you remove this sign, then 2 becomes half. That is the rule of log. Just remember, if you remove this negative sign, you have to take the reciprocal. That means इसके सामने जो साइन है वो अगर चेंज किया तो लॉग के सामने जो कुछ रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. Followed? In short, it is like this. I'll just brief. If you have minus log x, if you change this sign or remove the sign, x becomes 1 upon x. Or the other way around. Okay? Fine. So these are both answers for both integrals. Log sin x का भी ये आंसर है, log cos x का भी ये आंसर है. Either you can take this or this. Okay? Now in one CET question 2017, they have asked 0 to pi by 2 log of sec x. Okay, log of sec x. Now we know the formula for log of sin x and log of cos x. तो मैं क्या करने वाला हूं देखो. Sec is the reciprocal of cos or cos is the reciprocal of sec. So I am going to write this as 1 upon cos x. 10th standard formula. Sec x is 1 upon cos x. Then one upon cos x means cos x raised to minus 1. Laws of indices. 1 upon x is x raised to minus 1. 1 upon cos x is cos x raised to minus 1. Now rules of log, minus sign comes in front. That is minus 1 comes in front. अब ये माइनस साइन को अगर बाहर निकाला ओके, माइनस साइन को बाहर निकाला, माइनस 1 मीन्स माइनस. सो ये क्यों किया मैंने? बिकॉज आई नो द फॉर्मूला फॉर लॉग ऑफ कॉस एक्स. लॉग ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला एंड लॉग ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला सेम है. ओके, सो लॉग ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला आई विल सिलेक्ट दिस फर्स्ट. ओके, सो इफ यू यूज द फॉर्मूला व्हाट डू यू गेट? माइनस साइन पहला बाहर निकाला है, that is already there, and this formula says minus pi by 2 log 2. Minus of minus becomes plus. The answer is pi by 2 log 2. चेक करो कौन सा ऑप्शन है.
Option D. Right? So the trick was to convert this into cos, because we know the formula for log of cos x. Clear? Quite simple that way. Okay, let's take the next one now. लिख लो, problem लिख लो. Okay, let's start. You have to find this. So first thing is our standard rule. I'll write this as x squared पहला लिखा है. Then basic rule we know, coefficient of x squared जो है वो रखना नहीं है. Take it outside. It should be purely x squared. x squared के सामने अगर नंबर है तो ब्रैकेट के बाहर निकालना है, because that is the standard rule, so that we can use a particular formula. So 18 को बाहर निकालो. And you also know the rule that when any number is taken outside the bracket, inside you have to divide by that number. तो 18 को बाहर निकाला तो अंदर क्या हो गया? x squared plus 2 upon 18. Basic maths. Two ones are 2, 2 nines are 18. Now this 1 upon 18 take outside the integral. Okay, one more thing. This 1 upon 9, I'm going to write it as 1 upon 3 bracket squared. So which formula can you see now? Which formula can you see? dx upon x squared plus a squared. Let us write over there. This is your a. This is your x. So dx upon x squared plus a squared, formula says वन अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. तो हर एक फॉर्मूला में x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो x स्क्वायर के सामने 18 बाहर निकला है. 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. तो a देखो, a गया है, a is 1/3. So what do I get? 1/18 is already there. That is already there. 1 upon a, that is 1 upon 1/3. a is 1/3. अभी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. tan इनवर्स x upon a. x is x. a is 1/3. tan इनवर्स x upon a. फॉर्मूला यूज करने के बाद डोंट फॉरगेट अपर एंड लोअर लिमिट
equal to pi by 4. Upper limit is k. Question asked is find k. So अभी यहाँ पे कैलकुलेट करो. दिस बिकम्स 1/18. रफ वर्क कर रहा हूँ मैं. 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1. ऊपर लिया है मैंने 3/1. सो 3 6 18 हो जाता है. सो व्हाट रिमेन्स इज 1/6. बराबर है. tan इनवर्स 3 ऊपर चला गया. न्यूमरेटर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर. डोंट फॉरगेट x इंटू 3/1 दैट इज 3x. ऐसा है वो. x इंटू 3/1 दैट बिकम्स 3x. एंड zero to k. Sorry, it is 0 to k. Equal to pi by 4. अब एक काम करो. Take 6 on the other side. Okay. So tan inverse 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6 goes on the other side. There is one mistake. It is pi by 24. By mistake I have written pi by 4 here. Pi by 24 है. So वही मैं सोच रहा था 3 pi by 2 कैसा आ गया. So pi by 24 है. So let's see what we get. 6 goes on the other side. Pi by 24 into 6. It is pi by 24. By mistake I had written pi by 4 here. Pi by 4 अभी आने वाला है. So 6 4s are 24. That is pi by 4. 0 to k. Clear? चलो अभी यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. In place of x put upper limit minus tan inverse 3 into upper limit minus tan inverse 3 into lower limit. In place of x lower limit equal to pi by 4. So tan inverse 3k three into 0 is 0 minus tan inverse 0 equal to pi by 4. चलो करो सॉल्व. tan inverse 0 is 0. You get tan inverse 3k. Tan inverse 0 I am not writing. So how do you solve this?
Take tan inverse on the other side. Tan inverse, take it on the right hand side. So what remains is only 3k. Tan inverse goes on the other side as tan pi by 4. Tan inverse gets converted into tan. Pi by 4 is 45 degrees. Tan 45 is 1. Tan 45 is 1. So final answer is k equal to 1 by 3. That is the final answer. Okay? Alright, so let us take one more sum. Problem number 3. ये लिख लो सब पहले. Okay. Let's go to the third sum now. Solve this. How do you recognize the type? Minus pi by 2 to plus pi by 2. Minus a to plus a. Minus 10 to plus 10. Means always use the property of odd or even function. Okay? So for that, in short, minus a to plus a अगर रहेगा तो odd और even function की property check करनी है. For that, we have to check whether this function is odd or even. वो function odd है या even है. If our luck is good, we will get odd function. उसका आंसर सिर्फ 0 है. तो odd function कैसे recognize करना है देखो. See, write this. Let us call this function as fx. अभी ऑड और इवन फंक्शन चेक करने के लिए रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. जहां पे x है रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है. यहां पे माइनस एक्स, यहां पे माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में माइनस एक्स. क्लियर? बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. माइनस साइन को आगे लो. ओके? कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है कॉस के ऊपर. Cos of minus theta is cos theta, but sin of minus theta, minus sign comes in front. अभी ये माइनस साइन इधर आ गई तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया. ये माइनस साइन सामने आ गई. Okay, f of minus x. Now just now, some time back, we had seen one rule that if I interchange this, मतलब अगर reciprocal लिया, if I take this above and take this below, then log becomes minus log. माइनस लॉग बिकम्स प्लस लॉग. यानी जो सामने साइन है, चेंज दैट. व्हेन यू इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ लॉग, द साइन इन फ्रंट चेंजेस. ओके, दैट इज द रीजन दैट आई टुक दैट फॉर्मूला ऑल्सो. बेसिक रूल ऑफ लॉग है. सो लेट अस इंटरचेंज दिस. नाउ यू विल आस्क इंटरचेंज क्यों करना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट बैक 2 माइनस साइन एक्स इन द न्यूमरेटर. आई वॉन्ट टू गेट बैक एफ एक्स ओवर हियर. So I will interchange this.
एज सून एज अ इंटरचेंज प्लस का माइनस लॉग हो गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, इंटरचेंज किया, तो साइन चेंजेस. नाउ व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज right hand side, see what you get. Keep this minus sign as it is outside. What is this? Log of 2 minus sin x upon 2 plus sin x क्या है? It is nothing but fx. See, log of 2 minus sin x upon 2 plus sin x is nothing but fx. So it becomes minus of fx. Now remember this rule. If f of minus x you get minus fx, then the function is odd, and when the function is odd, we are very lucky, the answer is 0. Okay, so after replacing x by minus x, we observe that f of minus x is minus fx, therefore fx is odd, therefore integral is 0. That was the option given, as simple as that. Okay, so this is the property of odd and even function. Let us take one problem on one more property which we had discussed the other day. Let us see if you remember the shortcut. Try करो. ये सब पूछा था, PYQs है. Looks complicated, but it is not. सोचो, याद है कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? उस दिन लिखा था ना, if you get this type a to b, not minus a to plus, yeah, a to b, fx upon fx plus gx, fx यहाँ पे रिपीट हो रहा है, this is some other function, tan x upon tan x plus cot x. ओके, ऐसा अगर आ गया तो आंसर बहुत सिंपल है, b minus a upon 2. This is where the shortcut comes handy. b minus a upon 2, this is our a, this is our b, fx upon fx plus gx, b minus a upon 2, बस भैया आंसर हो गया. So b minus a upon 2 means what? Three pi by 10 minus करो सिंप्लीफाई, हो गया आंसर. टेन और 5 का एलसीएम 10 है. 10 इंटू 1 इज 10, 3 पाई इंटू 1 इज 3 पाई, 5 इंटू 2 इज 10, पाई इंटू 2 इज 2 पाई अपॉन 2. 3 पाई बाय 2 माइनस, सॉरी, 3 पाई माइनस 2 पाई, that is 1 pi. Now purposely they had given one option as pi by 5 because some students directly take 2 5s are 10. But you go wrong over there because don't forget your old formula. It's your old friend. Numerator upon denominator. Numerator into reciprocal of denominator.
2 का reciprocal 1 by 2. So the answer pi by 20 was also given, and for those who went wrong, 2 5s are 10 किया और गलत हो गया. Pi by 5 ही दिया था, but that's wrong. So that's how you have to be careful with your basics. Okay? Fine? Right. That will be all for today. We'll meet tomorrow now. Bye.